हाँ सॉरी 326। सो मैंने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज होने वाली है अपकमिंग सेशन में वो मैंने नोट डाउन करके रखी, सो उसको पहले डिस्कस कर लेते। फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, or it is also called as total cost or simply called as cost. It is represented by C of X. It is represented by C of X. Here X is independent variable and cost depends on this independent variable. Here the role of independent variable is it represent actually number of items that is produced. Okay, so C of X consists of two different costs. First one is fixed cost, that is TFC, and second is वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर ये चीज? इसको एक एग्जांपल से अगर समझना है तो सिंपल एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी फैकल्टी को हायर करते हैं हमारे यहाँ टीचिंग के लिए, और हम उनको यूजुअली जो सैलरी पे करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो फॉर एग्जांपल, अ टीचर इज टीचिंग ओनली वन स्टूडेंट, देन वी विल पे ₹500 टू देम। If he is teaching to 10 student, we will pay 5,000 to them. Okay, but अगर सपोज वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ाने आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसके लिए वो ट्रैवल के लिए जो पेट्रोल और अदर एक्सपेंसेस होंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो हम उनको एक फिक्स्ड सैलरी पे करेंगे, फॉर एग्जांपल 2,000, और उसके बाद उसको पर स्टूडेंट की सैलरी पे करेंगे ₹500 पर स्टूडेंट। ओके, सो the total salary consists of two costs, that is fixed cost and other one is variable cost. Similarly ये हर जगह पे अप्लाई होगा। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री रन हो रही है तो उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही, आप प्रोडक्शन नहीं करो तब भी आपको एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ओके, सो ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ the fixed cost is actually constant, it is not dependent on x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन एक्स। सो अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, या इसको बेस्ट होगा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, वेरिएबल कॉस्ट में अंडर ब्रैकेट एक्स लिख दे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्स, दैट्स व्हाई। ओके, सो अगर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है TFC, देन जस्ट पुट 0 इन प्लेस ऑफ C of X. C of X जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे 0 पुट कर दो एंड यू विल गेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यहां शिफ्ट कर दो, सो इट विल बी C of X माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दिस स्टेप इज क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? ओके, ये टर्मिनोलॉजी हो गई तीन टाइप की। नेक्स्ट आते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं AC से या फिर AC of X, because average cost sometimes depends on number of items produced and it is equal to C of X divided by X. मैं नहीं जानता आप लोग इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़े हैं कि क्या है, लेकिन मैं जो चीजें X is number of items produced. हाँ, correct. Next is average fixed cost. Average fixed cost. Fixed cost. So average fixed cost is represented by AFC, that is equal to TFC, total fixed cost divided by X. Next is average variable cost. Variable cost, it is AVC, average variable cost, and it is TVC of X divided by X. क्लियर ये चीज? ये सारी चीजें हमने अभी यूज की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट आगे जो चीजें मैं बता रहा हूं वो देखना और आप लोग भी थोड़ा उसमें कोऑपरेट करना, क्या होंगे रिजल्ट्स। यस नैना, कुछ डाउट है? यस सर। बोलो। Sir, TFC will also be equal to C of X minus TVC. विच, क्या बोले एक बार फिर से बोलना। TFC will also be equal to C of X minus TVC. यस यस, करेक्ट।
TFC will be equal to C of X minus TVC. If the total cost function and variable cost is given, then the difference will give you total fixed cost. Okay. Answer in that TVC bracket X, where you have written that is for explanation, no, that it will consist of X values. This term. Yes, so like in bracket you have written X, same with average variable cost also. So like Yeah. that is representing that it will include X, or like we have to eliminate it. No, actually, we should represent X because variable cost depends on X, number of items we are producing. Okay, that's why X should be there, but fixed cost is independent of number of items. That's why I'm not representing X here. Okay, Yes. कहाँ पर X लिखना जरूरी बोल? हाँ, तो हाँ, वो वही मैं बता रहा हूं, वो कॉस्ट फंक्शन और वेरिएबल कॉस्ट में लिखना चाहिए, बिकॉज वहां पर वो चीजें डिपेंड करती है नंबर ऑफ आइटम्स पे, बट फिक्स्ड कॉस्ट में वो डिपेंड नहीं करता, तो उसमें नहीं लिखेंगे तो चलेगा. ओके. यस, जब कॉस्ट जीरो होगा देन यू विल गेट ओनली फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर ये चीज? ओके, कंटिन्यू करें आगे. नेक्स्ट इज रेवेन्यू फंक्शन. सो नेक्स्ट इज रेवेन्यू फंक्शन. Actually, the cost function is basically the production cost. जितना भी production cost है. रुक जा, बाद में डिस्कस करूंगा, अभी एग्जांपल. ठीक है. Revenue function, it is usually represented by capital R or R of X. Why R of X? Because revenue depends on number of articles what we are selling. So the revenue function R of X is equal to X into P. Now here, what is X? X is number of articles or number of items. Okay, and P is price of each article. Price of each article. Okay. Some yes. Sometimes it is also called as demand into price. Demand into price. Whatever is the demand, multiply with that price, you will get the revenue. Okay. Or sometimes it is represented like this also, X into F of X. Here X is number of articles and F of X is number of price, whatever the price Yes, is. it will depend on the question, no, that whatever is given to us, on the basis of that we have to keep the values. Yes, correct. So this is what revenue. Next is profit function. Now what is profit? Profit is selling price minus cost of price. Here the selling price is means revenue minus cost. So profit function is represented by P of X, and it is R of X minus C of X. Clear? Profit is equal to revenue minus cost. That's it. Next is average profit function. Average profit function. It is basically P of X divided by X, that is equal to R of X upon X minus C of X upon X. Clear? Divided by X items. So X se divide kar do. Clear? Now the next term is break even point. Break even point. Break even point is the point, it means the value of X at which revenue is equal to cost function. When revenue function and cost function both are equal, then we can or we can say profit is equal to zero. जब profit zero होगा. Clear? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब X की वो वैल्यूज जिसमें रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगा.
यस, क्लियर। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, तो पेन को मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, इनिशियली मुझे 100,000 रुपीज की सपोज इंडस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, और 5 रुपए में, 5 रुपीज में मैं एक पेन मैन्युफैक्चर करता हूं। सो फॉर वन पेन द कॉस्ट इज 1,005 रुपीज, ओके। एंड अगर सेम पेन को मैं 10 रुपीज में सेल कर रहा हूं, सो आई एम एट लॉस ऑफ 995 रुपीज, ओके। सिमिलरली अगर मैं दो पेन्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी 1,010 रुपीज, एंड इफ आई एम सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज, टू पेन्स मीन्स 20 रुपीज, देन माई लॉस विल बी रिड्यूस्ड, ओके। सिमिलरली हाउ मेनी पेन्स शुड आई सेल टू टू अचीव दिस ब्रेक इवन पॉइंट? तो हो सकता है मैं 1000 पेन जब मैन्युफैक्चर कर लूं तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लूंगा। इट मींस एट दैट पॉइंट द प्रॉफिट इज जीरो, एटलीस्ट आई एम न्यूट्रल, मतलब ना लॉस पे जा रहा है ना प्रॉफिट पे जा रहा है, न्यूट्रल वाले पॉइंट को अचीव किया। क्लियर हुआ ये चीज? यस, ओके। Sir, x is equals to question mark. What Means x does is that number mean? of article that we should produce so that the revenue and cost are equal, okay. Okay, so I think these are the some basic terminologies. Now let's move to another terminologies that is called marginal functions. Marginal functions. So first is marginal cost. Marginal cost. It is represented by MC or MC of x. दोनों correct है, MC, and that is d by dx of c of x. So the derivative of cost function will give you marginal cost. Okay. Next is marginal average cost. It is represented by MAC. It is represented by MAC, and it is basically derivative of average cost. So that's why marginal average cost. So average cost means C of x upon x. Either we can write like this, or also we can write d by dx of AC of x. Average cost को AC of x से represent करते हैं और ऐसे calculate करते हैं. Clear? Okay. ओके, इसके ऊपर फर्दर और डिस्कशन करते हैं। MAC, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, इट इज इक्वल टू, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इफ we will differentiate this expression, this average cost function, then we have to apply quotient rule here. So by applying quotient rule, first we will get square of denominator, and further denominator, derivative of numerator, it means d by dx of c of x minus numerator, that means c of x, into d by dx of denominator, that is 1. क्या ये समझ में आया? Further, MAC is equal to x. Now, d by dx of c of x, it is what? It is MC, marginal cost. So we can replace this with MC. So in numerator, we can write x into MC minus c of x whole upon x square. Is it clear? Further, what we can write, ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सब बुक्स में क्वेश्चंस में हैं। आपको ये डेरिवेशंस करने पड़ेंगे. यू हैव टू मेक दिस डेरिवेशंस. फर्दर, इफ आई सेपरेट दिस, so it will be x into mc divided by x square minus c of x divided by x square. Okay. So if we take 1 upon x common from here, then first this x and this x, ये दोनों x cancel out हो जाएंगे. Then we can take 1 upon x common from here, then it will be mc minus c of x divided by x. Okay. Now this c of x upon x, what is this c of x upon x? AC, it is the average cost. So we can write this as 1 upon x into mc minus AC.
So this is another expression for MAC, marginal average cost. That is 1 upon X into MC minus AC. Okay. So just go through this and ask in case of any doubts, and note down this result, that is MAC is equal to 1 upon X MC minus AC. So we will use this direct formula only, no? We have to show the steps also. No, in some of the questions we have to verify these conditions, so we have to understand these steps also. Okay. ये हो गया, हटा दो. हो गया तो बताना, फिर आगे बढ़ूंगा. हम्म. हाँ, ये लास्ट टॉपिक है इसका, मैक्सिमा मिनिमा का. अ, हाँ, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. Marginal revenue, right? Marginal revenue. So this was marginal cost, and now we will calculate marginal revenue. Revenue. So how to calculate marginal cost? Derivative of cost function. So what about marginal revenue? Derivative of revenue function. So d by dx of r of x will give you marginal revenue. Okay. Anushri, Naina, shall we clear? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. So further, r of x was represented by p into x. Here x is number of items and p is demand. Okay. Here both depends on x only. तो यहाँ पर दोनों functions है. So we will apply the product rule. p into x. Revenue functions मैंने यहाँ पर लिखाया था ना. हाँ, प्राइस ये था, प्राइस into demand. ओके. सो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पर. Okay. So revenue function is this. So further, if we apply product rule, so it will be first function derivative of second, that is 1, plus second function, that is x, and derivative. Okay. Just a second में आया ना.
So हाँ, further differentiate करेंगे. So first function derivative second plus second function derivative first, so it will be dp by dx. Okay. Now सर if इसको we क्यों कर रहे हाँ हैं? किसको इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें एक और कंसेप्ट यूज होता है, वो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं. इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन. Okay, so it is represented by mr and some concept of economics like monopolistic economy. या पढ़े वी नहीं? नो दैट. हाँ पढ़े ये, हैं. ये तो पढ़ी है. तुम लोग कैसे बोल रहे नहीं? ओके. So monopolistic economy. There are some condition for monopolistic economy. For that we are going to do this. Okay, mathematical condition for that. Okay, so further, if we take p common from this, so it will be 1 plus x upon p dp by dx. Now what is p here? P is actually demand. Okay, and what is x here? Here x is price of मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पर? So I Sorry. think P will be price and X will be number of Yes, items. No? yes. P is price and X is number of items. Correct. Okay. So if the price is constant, it means dp by dx will be 0. हाँ? किधर से? इसमें वही मैं बता रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू मार्जिनल रेवेन्यू. तो उसके लिए मैंने बताया इसके फर्दर एनालिसिस. यहां से p कॉमन निकाला, सो यहां पर 1 बचेगा. यहां पर x है तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा? p. जस्ट बिकॉज जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सो p इंटू 1 यू विल गेट p एंड इट विल बी p कैंसल आउट हो जाएगा x dp by dx. ओके. Okay, so if, note the condition is if price is constant, price is fixed or constant, fixed or Sir, can you constant. please tell that step once again where you have written X by P and then outside bracket also you have written P? Here actually I have taken p common from here, so we have two terms, like this is the first term and this is the second term. So here p is there, so we can take p common, but in the second term there is no term of p, so we will write p on denominator just to balance out this expression. Just open the bracket and you will see it will be p into 1, that is p, and when this p is multiplied with this term, so pp will get cancelled out and you will get this term only. Okay. So, but that will make no difference, no? We can like directly use the formula which is given above instead of like multiplying it 2 times. Instead of writing like this, what we are doing, why we are writing like this? This is your question? Yes. Okay, so the question is in upcoming steps, just wait for 1 or 2 minutes. Okay, so just write down few points, then I will explain that reason. So here what I am writing is, if the price is fixed, so the price is fixed, so dp by dx will be 0, because if price is constant then its derivative is 0. So in this case marginal revenue is equal to p only. So marginal revenue is equal to price if the price is fixed. One more concept is there related to monopolistic economy. Just write one more note point from here. For monopolistic economy, सर हम लोग को स्कूल में लेकिन इतना नहीं कराए हैं इस टॉपिक में. मैंने आपकी बुक से ही एक्चुअली चेक किया है, मैं बता देता हूं, बट आगे क्वेश्चंस करेंगे उस समय हम देख लेंगे. फॉर मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी, p is a decreasing function. P, or we can write this as f of x. F of x that is equal to p is a decreasing function. Is a decreasing function, or we can say this expression
1 plus x upon p dp by dx is less than p. ओके, मैं कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समझना। अब ये मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी एक पर्टिकुलर कंडीशन है इकोनॉमी की, बट इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो P है, P इज व्हाट, P इज प्राइस। प्राइस रिड्यूसेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्लियर? प्राइस P जो है, प्राइस वो रिड्यूस होगा एस एक्स इंक्रीज। जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, डिमांड इंक्रीज होगी, सो प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो प्राइस इज बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। प्राइस मतलब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ आइटम्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पर आइटम की प्राइस जो है वो रिड्यूस होगी। मतलब ऐसा है कि अगर 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 आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको कॉस्ट कम लगेगा, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। हाँ, पर यूनिट सेल करने की बात कर रहा हूं। हम्म अगर आप प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा बनाओगे तो सेलिंग प्राइस कम कर सकते हो, यही बताना चाह रहा हूं। मतलब मैं समझ में आया ये चीज, तो And बस so वही what you have written there, function and then d to the power n, that is not clear. फंक्शन हियर, Yes, sir. What is this? actually I have written this only function. Actually P is price and it depends on X only sometimes, because sometimes price is not fixed, it depends on the number of items which we are producing. So as X is high, P is also high, it is given like this. Okay, okay. हाँ X, हाँ X हाई, सॉरी X हाई तो P कम होगा। ओके ओके, नेक्स्ट for this particular economy, next is MR. One more condition is here, marginal revenue, that is equal to P times 1 plus X upon P dP by dx. It is less than P. It is actually less than P. ये कंडीशंस उसमें गिवन थी। अब इसको देख लेना, ये सब आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, बट ये जो चीजें मैंने वहां से निकाली हैं ये गिवन थी, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड। इट इज लेस देन पी, और वी कैन से एमआर इज लेस देन एआर। लास्ट दो टर्म्स इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, बिकॉज मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे नहीं है, बट ये इकोनॉमी का पार्ट था, उसमें गिवन था जो चीजें मैंने नोट डाउन की, ठीक है। ओके, ये वाला कंडीशन, इसमें कंडीशन का ये सिग्निफिकेंस था, मेंशन था कि जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, पी की वैल्यू रिड्यूस होगी, और ये वाली जो वैल्यू मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन पी होगी फॉर दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी, ऐसा मेंशन था उसमें। क्वेश्चंस में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखते हैं, ठीक है। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी फर्स्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी, प्रॉफिट फंक्शन, मार्जिनल फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, सब लिख के रखा है ना। ओके, क्वेश्चंस पे मूव करें हम। अभी रुक जाओ, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। नाउ द क्वेश्चंस जो आएंगे आपके एग्जाम्स में वो आएंगे एक्सरसाइज 6.10 से। So I think we should start with exercise 6.10, because before that at exercise 6.8 and 6.9 it is just based on terminologies of economics. तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने तो मैं उससे डिस्कस कर देता हूं, बट आई थिंक वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन 6.10 ओनली। ओके, आफ्टर द क्लास आई विल क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम अदर एक्सरसाइज। ओके, So that I have done, I got to know how we have to solve. okay. The third part I got to know. Okay, so let's start with first question, exercise 6.6.10. Question number 1. Question number 1. So the question number 1 is, given the cost function of x units of commodity as follows. So cost function given is c of x. क्या है, एक बार बोलना रिया?
1/3x square plus 3x square minus 16x plus 2. आई थिंक ये क्यूब होगा ना, 1/3x क्यूब, 1/3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2. क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन है. फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर. First is marginal cost function. It means MC of x. Clear ये चीज. Second, average cost function AC of x. We sometimes simply represent as MC or sometimes represent it as ACF only. Okay. हाँ. So recall करो जो अभी मैंने लिखा है marginal cost function MC. It is d by dx of cost function c of x. So it is d by dx of c of x. C of x function क्या है, 1/3x cube plus 3x square minus 16x plus 2. So its derivative will be क्या होगा इसका derivative? x square plus 6x minus 16. So this will be the marginal cost. Clear हुआ ये चीज? First part, answer of first part. Now for the second part, ACF. So just look at the formula how we calculate ACF, average cost function. It is cost function divided by number of item, that is x. C of x divided by x. लिख दिया ऐसे ही, अब वो देख लेना ऐसे ही, उसका कोई लॉजिक नहीं मेरे ख्याल से. उसमें एसी बस लिखा है क्या? हाँ तो एसी रहने दो. एक्चुअली क्या, मैं ये सारी टर्मिनोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं उसको ऐसे ही, बट आप लोग देख लेना इसको. सो एसी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स. सो यू विल गेट 1/3x स्क्वायर प्लस it will be 3x minus 16 and plus 2 upon x. So this will be average cost function. Clear? It will. Okay. Okay. Any doubts? Naina, Shavi, clear? Yes, Krishna, sir. Priya? Okay. So for this average cost, I think it will be equal to marginal cost only, no again? No, it is not equal to marginal cost. You can So see it here. will take the derivative. Huh? Okay, understand. Yes, I got it. Okay. नहीं ऐसा नहीं करना है अभी. हाँ अभी सिंपल हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पहले ये टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोली आएगा. इसीलिए मैंने कुछ एक्सरसाइज स्किप किए जस्ट बिकॉज वो उतनी ज्यादा रिलेटेड नहीं थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से. इसके बाद ये खत्म. आंसर चेक कर लो अपनी बुक से, यही आंसर है. अभी आएगा स्लोली, अभी पहले बेसिक तो करो. ये क्लियर ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करो फिर. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. So in question number 2, what is given? Cost function is given, c of x, that is equal to 2x square plus 5. Okay. And you have to find average cost. So what will be average cost? AC. So Simply, it will be 2x minus 4 plus 5 by x. yes, correct. Plus 5 by x. So this will be the average cost. क्या हुआ रिया? हाँ क्लियर ना? हाँ. Second is marginal cost. अच्छा, just wait. It is what is given in question? The average cost and marginal cost when x is equal to 10. When x is equal to 10. So the condition is given when x is equal to 10. So you have to put a 10 here. हाँ वो दोनों के लिए मेंशन किया है. एवरेज नहीं ऐसा मेंशन है ना, द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 10. आई थिंक दोनों में पुट करना पड़ेगा ना. AC ऑफ 10. हाँ. सो 2 into 10 2 आ रहा है क्या? हाँ
16.5 First आ रहा है. one will be 16.5. Yeah. 16.5. Okay, check. बाकी लोगों का भी आया कुछ डाउट? अनुश्री, नैना कुछ पूछ रहे हो? सर Now marginal cost MC of X. If I am writing MC or MC of X, both are correct representation. It is d by dx of C of X, and it is equal to 4x minus 4. Now put 36. 36. 36. Okay, so the marginal cost is 36. Okay, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अब कंटिन्यू करो, स्टार्ट करना. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. So the question number 3, total cost function of a production is given by C of X is equal to 3 by 4 x square minus 7x plus 27. Find the number of units produced when, find the number of items produced when MC is equal to AC. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सर नहीं। पहले एमसी निकालेंगे देन एसी निकालेंगे देन दोनों को इक्वेट कर देंगे. एक बार रिपीट करना अनुश्री, पहले क्या करेंगे? एमसी निकालेंगे करेक्ट. हाँ. देन एसी करेक्ट. हाँ. देन विल इक्वेट बोथ ऑफ देम. Yes, correct. So first we will calculate MC, marginal cost, and how we calculate marginal cost? Derivative of cost function. Second, we will calculate AC, that is average cost. It is cost function divided by X. So we will get a marginal cost as, कितना आएगा marginal cost? 3 by 2x minus 7. 3 by 2x minus 7, and average cost function will be 3 by 4x minus 7 plus 27 by x, and we will equate MC and AC, and we will get the value of x. 3 by 2x minus 7 is equal to 3 by 4x minus 7 plus 27 upon x. So ये 7 और 7 cancel out हो जाएगा, and further you will get the value of x. क्या आ रहा है x का वैल्यू? x is equal to 6. ओके, और किसी का आया? नो सर इट इज नॉट कमिंग. सर एलसीएम लेंगे ना? So I think we will get a quadratic equation. No, N- I think just shift this term here. Yeah. It will be 3 by 2x minus 3 by 4x. That is equal to 27 upon x. Further, the difference of 2 will be 3 by 4x only. After taking LCM, you'll get this. So it will be like this. Now cross multiply. So here x into x, it will be x square. On the right hand side, it will be 27 into 4 divided by 3. So 3 ones are 3, 3 nines are 27. So x square is equal to 36. So you'll get two values of x, plus 6 and minus 6. But it cannot be negative value because x is number of items we are producing. So we cannot produce negative number of items. So x is equal to 6 is the right answer. Okay. Any doubts? Anushri, Naina, clear? Shavi, clear? Yes, sir. यस सर. Okay. Next question, continue करते चलो क्वेश्चंस.
Next, question number 4. सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले AC निकालेंगे और फिर इसका d/dx निकालेंगे ना LHS में. AC गिवन है ना. नेक्स्ट तो क्वेश्चन में C C of ऑफ X निकालेंगे. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो. यस. C of X इज इक्वल टू A. सॉरी, उल्टा लिख रहा हूं ना. Yes, AC is equal to C of X upon X. So just multiply this X with this. So C of X is equal to AC into X. So you will get AC. So you'll get C of X. So C of X will be X. 1/3x cube plus 3x square minus 7x plus 16. Correct. So 1/3x cube plus 3x square minus 7x plus 16. हाँ, क्या पूछ रहे हो रिया? मतलब ये फॉर्मूला देखो, हमने पढ़ा था ना AC का. तो AC गिवन है, तो AC से X को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो विल गेट C ऑफ X. C of X in terms of X. Further, you have to determine marginal cost. So differentiate this with respect to X. So marginal cost. Yes, marginal cost MC, that is equal to d/dx of C of X. So the derivative of this function will be x square plus 6x minus 7. Minus. Yes. Now, in the second part of this question, show that this expression. So, नहीं, आपको जैसे मैंने वो डिराइव किया था ना, सिमिलर अप्रोच पे डिराइव करना है. शो दैट. सो क्या करना है? शो दैट. एक बार मैं लिख देता हूं. शो दैट. बोलो क्या है फंक्शन? Marginal average cost. It means MAC is equal to X into MC minus C of X X square. So you have to prove this. So I think you all can do this by your own. Explain. अगर नहीं बन रहा है तो मुझे बताना, otherwise. Yes sir, second वाला point नहीं हो रहा है. Sir, Okay. first x square will get cancelled, no? Like we will be left with x only in Here? the denominator. Yes, sir. No, we cannot cancel this X and this X. If this X is common from numerator, if it is multiple of both the terms, then only we can cancel this X. Yes, we can separate this, but it is the solution will not be like that. It is based on this MAC. Now, how MAC is calculated? Marginal average cost. चेक करो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट. अरे, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन देखो ना, जब मैंने लिखाया था MAC. क्या है MS? यस, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट. सो इट इज इक्वल टू, मतलब जो मैंने वहां पर डिफरेंशिएट करके प्रूव किया था ना, सेम प्रूफ यहां पर क्वेश्चन में लिखा है. यस, तो वो जो मैंने प्रूव किया था ना, सेम प्रूफ आपको फिर से करना है यहां पर. सो d/dx ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विल गिव यू मार्जिनल एवरेज कॉस्ट. सो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विल गिव यू मार्जिनल दैट फंक्शन. दैट्स इट. सो डिफरेंशिएट दिस. So d/dx of this, so you apply quotient rule, so x square. Now further x into derivative of numerator, so it is d/dx of C of X minus numerator, that is C of X, and derivative of denominator, it is 1. So it will be x, and this term will be MC, margin. 1 by x MC minus AC, no, that one formula. 1 by, repeat. 1 by x bracket MC minus AC. Yes, yes, yes.
बस यहीं पर छोड़ दे. हाउ वी हैव डिराइव्ड दैट फॉर्मूला, वी जस्ट नीड टू डू द सेम हियर ऑल्सो. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली डेरिवेशन ऑफ दिस पार्ट. ओके. हाँ. ओके. एक मिनट चेक करते. वैल्यू पुट करके कर रहा हूँ. जस्ट वेट. ओके. सो वी हैव टू वेरी. That हाँ. नहीं आ रहा है. ये डेरिवेशन तो क्लियर है ना? ओके. नाउ जस्ट लुक एट दिस. Marginal average cost is d by dx of average cost. So put the value of average cost. Average cost की वैल्यू यहां पर क्या है? क्वेश्चन में गिवन है ना एवरेज कॉस्ट की वैल्यू. क्या गिवन है? 1/3 x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x. Okay. So the derivative of this expression will be 2/3x plus 3 minus 16/x². So this will, ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसको वेरीफाई करने के लिए. ओके. MAC will be this. Further, on the right hand side it is x into MC minus c of x divided by x². So just put the values of x, m of c. M of c is what? M of c. M of c हमने नहीं निकाला. ये है m of c. हाँ. mc into x. So x into mc, that is x² plus 6x minus 7 into c of minus c of x. So minus c of x. तो ये वाली वैल्यू है c of x की. So minus 1/3 x² plus 3x² minus 7x plus 16 whole upon x². क्या ये समझ में एक्सप्रेशन? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? ये क्यूब है ना. सो इट विल बी x³ प्लस 6x² माइनस 7x. ये वाली टर्म ब्रैकेट में है ना, ये पूरी टर्म्स माइनस में. सो इट विल बी माइनस 1/3 x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 16 होल अपॉन x². ये यहां तक क्लियर? क्या किया है यहां पर? वैल्यूज तो पुट किए. MC की वैल्यू यहां से कहा निकाली थी हमने? MC की वैल्यू, ये MC की वैल्यू माइनस सी ऑफ एक्स. सो ये सी ऑफ एक्स की वैल्यू. ओके. डिवाइडेड बाय क्या है? x². सो डिवाइडेड बाय x². फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो. सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x³ हाँ इसको डायरेक्टली कर देते हैं. x³ माइनस 1/3 x³. इट विल बी 2/3 x³. दिस टर्म 6x² minus 3x². It will be 3x². Next plus 7x minus 7x cancel out हो जाएगा. Minus 16 whole upon x². Clear? Further x² को सेपरेट कर देते हैं. So देखो टर्म्स क्या आएंगी? ये हो जाएगी 2/3 x². ओके. नहीं 2/3 x. 2/3 x क्योंकि x³ x². It will be 3 x² cancel out. Minus 6 upon minus 16 upon x². Now compare the LHS and RHS. So this was the LHS and this is what? RHS. दोनों सेम आ रहा है. तो ये वेरिफिकेशन कहां पर? MSC निकाल के नहीं, एक्चुअली वेरीफाई करने बोले. इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? शो दैट मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस. हाँ पहले वाला करना था, बस यहां पर शो करके खत्म कर देना था. ये वाला चीज मैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट में. इन केस इफ क्वेश्चन इज आस्किंग टू वेरीफाई दिस देन वी विल डू दिस. और ऐसे क्वेश्चंस हैं आगे, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू वेरीफाई दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. सो चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. दिस क्वेश्चन इज क्लियर? अनुश्री, नैना, शैवी? Yes, sir. Yes, sir. Question number 5. Question number 5. d by dx of, verify d by dx of AC, that is equal to 1 upon x
MC minus AC. For the cost function, first is C of x is equal to root AX plus B plus C. For this cost function, we have to verify this expression. So for verification, first we have to calculate AC, and AC will be root AX plus B plus C whole upon X. Okay, clear? Next, further we have to calculate MC. So MC will be Can you please explain this one again? this part. So like the question is asking us to verify. So is it something like that using like part one and part two, we have to prove the Yes. above equation? Yes. What we have to do, we have to calculate LHS, that is d by dx of AC. We have to find the value of this function, and similarly we have to find RHS also, that is half of MC minus AC, and we have to show that LHS and RHS both are equal. So to do that, first we have to calculate AC. So that's why I have calculated AC here. Now I have to calculate MC also for right hand side, or either we can directly differentiate this expression and we will get LHS. Okay, that part is also fine. So we can directly differentiate this expression and we will get LHS. So d by dx of AC. Is it clear, Chevy? Sir, I have doubt. Like CX is equals to root AX plus B plus C is given to us. Yes. Sir, so exactly what question is asking us to do? Like, do we have to prove the verification using this question, the first part? Okay, actually what we have to do, by considering C of x is equal to this, first we have to calculate AC and we have to formulate this left hand side function, and similarly we have to find the right hand part also, and we have to show that both the function are similar. Just try Yes. to understand the So solution, then basically, we are converting CX in the form of AC so that we can get the desired function to prove yes. LHS and RHS. Yes, correct. We are going to find our desired right hand and left hand side functions. Okay, so apply quotient rule here for derivative. So it will be x square, denominator, derivative of numerator. So the derivative of this complete term will be 1 upon 2 times root ax plus b into derivative of this ax will be a, plus derivative of c is obviously 0. So I'm not writing that part, minus numerator. So here the numerator is this ax plus b plus c into derivative of denominator, it is 1. So further d by dx of AC will be it will be like, I think चेन रूल अप्लाई होगा ना? हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 into a और सिंपली a. So it will be, अरे चेन रूल लगेगा ना. रूट ये न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर, ये देखो ये पूरा न्यूमरेटर है. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लोगे तो इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon 2 root ax plus b. फर्दर यू हैव टू डिफरेंशिएट ax plus b also. सो डेरिवेटिव ऑफ ax will be a, b का डेरिवेटिव 0, फिर c का डेरिवेटिव भी होगा बट वो 0 है. क्लियर? हाँ, नहीं पूरा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है. फर्दर ये हो जाएगा ax upon 2 root ax plus b minus root ax plus b plus c upon nothing. So it is 1 whole upon x square. So I'm just separating this x square, distributing this x square here and here also. Is it fine? क्या ये समझ में आया क्या किया है मैंने? Okay. Yes, sir. Okay. Further, this 1x and this 1x
will get cancelled out and it will be a upon 2x root over ax plus b minus this term will be root over ax plus b plus c whole upon x square. कहां पर? यहां वो कुछ नहीं हो, मैं कट कर दिया हूं गलती से, ठीक है? ओके, so this is what LHS left hand side. Okay, now we can stop here and further we will find RHS. Okay, so to find RHS, first we have to find this MC. So what is MC? MC is d by dx of c of x. So the derivative of cost function, derivative of this function will be what? 1 upon 2 root ax plus b into a. क्लियर? चेक करो, क्या कुछ डाउट है क्या? क्लियर यहां तक? सो और वी कैन राइट a अपॉन, इस साइड खड़े हो जाओ, 1 upon 2 root ax plus b. Correct? So this will be the MC. Now AC we had already calculated AC. So this is our AC and this is MC. Now put both the values of AC and MC on the right hand side. RHS. So here the RHS is 1 upon x, MC minus AC. So it will be like 1 upon x under bracket MC. So it is a upon 2 root ax plus b minus AC. So the AC is this root ax plus b plus c whole upon x. Okay. Now open the bracket and you will get a upon 2x root over ax plus b minus root over ax plus b plus c upon x square. Now check and compare with the left hand side. So this expression was for left hand side LHS and this expression is for RHS. So here you can see LHS is equal to RHS, hence the given expression is verified. क्लियर? समझ में आया? अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस. Similarly you can do the second part also. ना कल भी क्लास है. हाँ, कल भी क्लास है, हो क्या? अच्छा, कल की टाइमिंग, हाँ चलो कल की टाइमिंग डिस्कस कर लो. अगर आप लोग की NSCC में